विशाल लिखते हैं कि कई दिन योग निद्रा करता रहा, पर बीच बीच में कई बार सो जाता था या शरीर हिल जाता था। लेकिन इस बार जब ये योग निद्रा करी तो ये एक्सपीरियंस अनुभव ये रहा कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के बिल्कुल करीब हो जाए और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सुखी महसूस करता है, तो ऐसा ही लगा जैसे मैं एक बड़े सुरक्षित स्थान पर हूँ योग निद्रा का अभ्यास करते समय। और एक बहुत गहरा अनुभव रहा और एक सुरक्षा की भावना रही। जैसे कई बार होता है ना कि आदमी को एक सेंस आने लग जाती कि कुछ बुरा होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो अंदर एक एहसास आ जाता है कि कुछ अच्छा होगा, और फिर एक एहसास हो कि कुछ अच्छा हो गया ना, अब तो हो गया, और उस अच्छाई को जी रहे हैं, उस अच्छाई में जी रहे हैं ना। अंदर से एक सुकून सा आ जाता है, एक अंदर से खुशी सी आ जाती है, एक अंदर ठहराव सा आ जाता है, एक अंदर मस्ती सी आ जाती कि अब सब ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो लोग भी साधना कर रहे हैं उनकी साधना खूब रंग ला रही है, उनका मन संतोष में है, उनका जीवन ठहराव में है, और वो निरंतर इस साधना पथ पे अपने आप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ठहर नहीं गए हैं, नदी की तरह बह रहे हैं, और रोज एक नया नया अनुभव उनको हो रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एसवाई देवी दत्ता लिखते हैं, मैं जब योग निद्रा करता हूँ तो मुझे वो घी की सुगंध भी आती है, और मैं शिव के मंदिर का वो द्वार भी देख पाता हूँ, फिर शिव को भी देख पाता हूँ, और वो सब अनुभूतियाँ मुझे होती हैं जो आप कहती हैं। ये एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहता है। निश्चित रूप से अगर आप जैसा चला रही हूँ वैसे चलते रहेंगे, जैसा सिखा रही हूँ वैसा सीखते चले जाएंगे, तो ये सब जो दिव्य अनुभूतियाँ हैं ये तुम्हारी प्रत्यक्ष साक्षात अनुभूतियाँ हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि फला महात्मा की किताब में ये था, फला महात्मा की किताब में वो था। फिर तो सत्य ये है कि तुम खुद उन अनुभूतियों को लेने लग जाओगे, और सौभाग्यवश तुम खुद एक महात्मा फिर बन सकते हो, और बन जाओगे या बन सकते हो, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि कब तक विषय वासना के कचरे में पड़े रहोगे? हाँ, कब तक? जन्मो, पढ़ो लिखो, ब्याहो, पैसे कमाओ, बच्चे ब्याहो, फिर बीमार हो जाओ, या पोते पोतियों की सेवा करते रहो और बीमार हो जाओ और फिर मर जाओ। तो बहुत लोगों का तो प्रोग्राम यही है, बहुत लोगों का प्रोग्राम यही है, ज्यादातर लोगों का प्रोग्राम यही है। और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप यही भर करना चाह रहे हो तो करिए। पर ये ऐसे हो जाएगा जैसे कोई किसी को हवाई जहाज मिल जाए और वो हवाई जहाज को खेत जोतने के लिए लगा दे। कैसा लगेगा? हवाई जहाज से वो अपना खेत जोते, वो चलता है ना, तो उसी के पीछे वो अपना हल लगा दे, और हल चल रहा है और उसके खेत जुत रहे हैं। कहाँ तो जहाज मिला था आकाश में उड़ने के लिए, और कहाँ वो अपना खेत जोत रहा है ना। ऐसे ही मानव जन्म मिला तो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए। बार बार वासना का कीड़ा बन के, विष्टा का कीड़ा बन के जन्मने के लिए तो यह है नहीं। ये तो बना है आत्मनिष्ठ होने के लिए, ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए। पर बहुत लोग चुनते हैं नहीं यही ठीक है। बुरा ना मानना, पर मैंने जब कहा विष्टा का कीड़ा बनना पसंद करता है,
ख्याल रहे माता के गर्भ में जब भ्रूण बनता है तो माता के गर्भ के बिल्कुल साथ में क्या गुजरती है? माता की बड़ी आंत, जो मल से ही तो भरी होती है, नहीं? तो 9 महीने वो वहीं रहता है। और जो गर्भाशय होता है वो एक जल से भरा हुआ होता है, और जब वो बच्चे के सब अंग प्रत्यंग बन जाते हैं ना, तो 6 महीने 5 महीने के बाद से वो उसी में मूतता है और वही पीता है। उसका सिस्टम शुरू हो जाता है ना काम करना। वो बहुत सा पीता रहता है, क्योंकि उसकी जो पौष्टिकता की आवश्यकता है वो तो रक्त से पूरी हो जाती है, डायरेक्ट ऑक्सीजन उसको मिल रही है, वो उसी में रहता है। और एक गायनोकोलॉजिस्ट जो है, वो मेरी शिष्या, उसका अपना नर्सिंग होम है, तो वो कहती है कि अक्सर जब स्त्रियां प्रसूति में होती हैं तो जिस समय वो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, कई बार उसी समय उनका मल निकल जाता है, तो वो बच्चे पर भी लगा हुआ होता है। तो फिर हमको, अब हमारे लिए तो आम बात है, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो रोज की बात है ये। अब माँ को, वो स्त्री को वो कह रही है कि तू जोर लगा, तू जोर लगा, और वो जोर लगाती है तो बच्चा निकले ना निकले, मल पहले निकल जाता है, और फिर कई बार बच्चा भी निकल आता है और उसी मल से भर जाता है, रक्त से सना हुआ होता है। तो इसी को कहते विष्टा का कीड़ा विष्टा माहे समाये। गुरुवाणी में ये पंक्ति आती कि विष्टा का कीड़ा अंततः फिर कहाँ मरा। अच्छा, आपने अगर कभी नोट किया हो, अगर आपके बहुत नजदीक किसी की मृत्यु हुई हो घर में, तो अक्सर कर जब प्राण निकलता है, अक्सर कर मोर देन 80% में कह रही हूं, उस समय स्त्री या पुरुष का मल भी निकल जाता है। तो जब उसको आखिरी स्नान कराने लगे तो वो देखते हैं मल है, तो कई बार कहते कोई नहीं, ऐसे ही कफन डाल दो, अब कौन धोएगा, तो कौन गंदगी साफ करेगा। तो बहुत कॉमन है, जो आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए रोज की बात होती है कि अंतिम श्वास जब निकलता है, मल या मूत्र या दोनों एक साथ जो है वो निकल जाते हैं। तो शायद इसीलिए हमारे यहाँ स्नान कराने की विधि है कि उस मृत शरीर को अच्छे से साफ कर दो। हाँ, फिर कई बार अस्पताल में शरीर छूटा है और वो इस हालत में भी नहीं होते कि उनका स्नान कराया जा सके, तो वहीं उनका तो मल मूत्र सहित ही उनको पैकअप करके वो कफन बांध के और गांठे वांठे बांध करके और नाक में रुई ठूस करके लो भी ले जाओ और कर लो अंतिम क्रियाकर्म जो करना है, दबाना है कि जलाना है कि क्या करना है। तो मल द्वार से जन्म रहा है, मल के सहित जन्म रहा है, और मरता है तो उसी मल मूत्र में फिर सन रहा है। तो अगर गुरबाणी कह रही है कि बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माहे समाये, तो कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना। और बहुत लोगों को यही सही लगता है, बहुत सही लगता है। इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, मल मूत्र भी कोई दोषपूर्ण चीज नहीं, शरीर का हिस्सा है, अभी भी तुम्हारे पेट में होगा। अधिकतर लोग तो ऐसे ही कब्ज के शिकार हैं, उनका साफ ही नहीं होता पेट, खाते रहते अंदर जमा होता रहता। तो अभी भी तो मल के सहित ही जी रहे। यही मल मूत्र से भरे हुए शरीर को कहते हो मैं कितना सुंदर हूं। तो हम सिर्फ देह नहीं हैं, ये जानने का सौभाग्य तो सत्संग और ज्ञान के द्वारा ही संभव। नहीं तो शरीर से जन्मे, शरीर से जिए, और फिर शरीर के साथ मैं मेरे, और रोते रोते मरता है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। संजय देशपांडे। I felt a mild electric current flowing in my body. Sometimes I feel that something pointing inside from my body. I felt very much fresh after the Yog Nidra. And thank you very much. See, our body is nothing but bioelectric magnetic force. And the Yog Nidra kind of brings an order to this
bioelectricity. And there is a possibility and there is a chance that you will begin to feel that very strong electric current as if it's flowing through your head to the tip of your spine. Or you might feel it in the tip of your spine, or you might feel at your heart, or you might feel in your head or forehead, or you might feel in your limbs. It is possible it might get its expression at any area of your body. And that's something which is very amazing. I am reminded of a young boy. He did his first ever dhyana session with me. He's 18 years old or so. So I had conducted the Urja Dhyan. So sitting right in front of me, he did the Urja Dhyan. And the point came when his head was going round and round and round. So it was like a nice sway. And in a nice way his head was. So just that when the time came and I said that now the time is over, you may open your eyes, but this young boy is still in that ride. He's enjoying that. Now there's no music being played, but the inner music is running, so his head is swaying and twirling. So I just held his head tight like this. And when I'm holding the head like this, obviously he is still. The moment I left my hands, again his head is swaying in small circles. And then I would hold. And then still, and then I would leave, and it was like a game, and his family was there, and the other people who had opened their eyes, and they were just in peals of laughter that what's happening. Later on, he said to me, what was that? Because I have not taken anything, liquor or alcohol or nothing intoxicating, but yet I couldn't hold my head still. What was that? And I know when you would hold and when you would leave, but still what I was feeling inside, as if the bliss bombs are exploding within, and I am just in this dance and my body can't just stay still. What was that? And I said, well, that is called Guru Bar. Bar of Guru. B-A-R. Bar, it's a Guru bar drink. In my bar there are no glasses, no ice, no lemon, no pouring, no crackling of wine, and no sound, and yet you will be drunk. This question from Rohit. I came here after reading a book of Swami Satyananda Saraswati on yoga. I really found this very helpful at the beginning stage of Yoga Nidra. I felt like my body was slowly getting anesthetic vibes. I started to lose the sense of body. I was afraid at first, thinking maybe I had fallen asleep. But I found that I still had my consciousness awake, that yet I couldn't feel the body at all. It was no less than a magic. Now I've been doing it for 2 months. I feel good, relaxed, and still magical. Yoga Nidra is a deepest experience of the Raj Yoga, especially for the stage of Pratyahar, as I have said it many, many times, that to have a very clear-cut, thriving experience of Yoga Nidra, you have to have the step 1, 2, 3, 4 to be practiced thoroughly. That is your Yam and Niyam, the 5 principles which you have to live with.
5 niyamas, the rules when you will deal with people. There are rules what you should have when you are living your life. Beginning from non-violence, ahimsa, to truthfulness, to brahmacharya, to not falsifying and having false claims about achievements which you haven't, not doing any kind of theft, not being egoistic, and being very particular and very diligently doing the swadhyaya. Swadhyaya is when you are doing the studies of the relevant scriptures, Vedanta and Yoga, relevant scriptures properly, and trying to imbibe all that in your practice and your life. When you have done these 10 rules, 5 for yourself, 5 when you will deal with others, and then comes the third stage of practicing asanas. Now, asana practice is not something which you can accomplish in 1 day or 1 week or 1 month or 1 year. It's a slow progress because the awarefulness of you is so dim that it takes a challenge to actually experience that bright light of attentiveness. So all the challenges, and then what I always say is not doing the asana by watching some YouTube video, but by being in a place, being with a good teacher who have experience of 10-20 years at least, who knows the body anatomy, who knows the intricacies of the subtle body, who knows the intricacies of the pranavayu in the body. And then with the deepest practices of asana comes the ability to do pranayam properly. Once you do the pranayam properly, then only there is a possibility of pratyahara. Pratyahara means bringing your senses inward. There is no tussle, there is no conflict, there is no suppression of any emotion or any urges. And your mind is so pristine, clear and beautiful that this seems to be so utmost clear that this is you have to do. I always say this and I repeat the words of B.K. Iyengar. He used to say this, that when a yogi practices asana, his body is like forming the exact lines, and so it's an artwork. But inside yogi's mind is like a scientist. Observation, analysis, a very astute mind. And thirdly, the experience which a yogi will attain will give him so much of satiety, so much of contention, so much of sense of completion, that there is no restlessness left. So when somebody is doing asana or pranayam, it can be very evidently clear whether this person is a contented person or a very discontented person. Whether this mind is restless or this particular mind is very quiet. So your body is the reflection of your mind. So whatever goes in mind gets reflected in your language, in your speech, in your movement, in your actions. So bringing this beautiful synergy in between the body and mind and the breath, then you are ready for the experience of Yoga Nidra.
And what Vedanta talks about, I am not body, I am separate from the body, this becomes not just a statement coming from Upanishad, but it becomes your experience as you are able to observe your own body as if it is somebody else's body. So this is not a point of repetition alone that Guru is saying you are not a body and the Shishya says, oh yes, I am not the body, without even realizing what the Guru is intending to say. So Yog Nidra is indeed a beautiful practice, and Swami Satyanand was definitively a giant, a great yogi who laid down such a beautiful path and such a beautiful learning experience. I met him in Munger, in Rikia. His main ashram was in Munger, but he, after a few years, he had left his own ashram. People renounce homes, he renounced his ashram. People renounced their family, he renounced his disciples. And big organization. And after traveling the whole country, he settled in Rikia, where he did intense austerities. And just 10 days ago, I got a call from Swami Satyasanganand Saraswati, who is his disciple, who was given the responsibility of running the Rikia ashram. And she is doing that. The Munger was left with Swami Niranjananand Saraswati ji, and the Rikia was left with this women Swamini, Swami Satyasanganand Saraswati. So we lovingly call her shorter name, Satsangi. And she called and she said that this will be centenary of Swami Satyanand, and they are having a huge celebration in month of December, and she wanted me to be there, which I agreed. I said, surely I'll be part of this great event and pay my respects to this disciple of Swami Sivanand, who, along with his battery of disciples, Swamis and Swaminis, Sadhvis, who world over traveled and established so many ashrams and teaching yoga and teaching Vedanta and this passing on this Vedic knowledge. So it's great. And as such, like the Akasha is same. Whosoever is underneath, for them the Akasha is same. Similarly, this knowledge, this Vedic knowledge, isn't property of one individual. This is like eternal flow of divine knowledge. That's why we believe that Vedas are not written by any human, but they just got their expression through the human beings. It's divine knowledge, this Vidya, is another name of a Brahma. So, from wherever and whichever body this gets expressed, that person, body might be male, might be female, but becomes a great boon to the whole society. Swami Sivananda was a great banyan tree, and so was Swami Satyanand Saraswati, another great name who trained scores and scores of men and women, introduced them into the yoga path and Vedanta path. So nice.